Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. So this is the session for class 2nd, subject English, in which I am taking the grammar part, जिसमें कि मैं grammar part लेने जा रही हूँ. And today we will continue lesson 8, that is pronouns. आज हम lesson 8 को continue करेंगे, जो कि क्या है pronouns. And this is the lecture 2 for this lesson 8. और ये lesson 2 का lecture 2 है, जिसमें कि मैं आपको और अच्छे तरीके से pronoun को clarify करूँगी. So you have to take care while I am defining all the things. जब भी मैं कोई चीज़ आपको define करूँ, just listen carefully, repeat twice with me, and you are able to find out pronouns or you are able to fill the pronouns. So let's proceed. So a pronoun is a word that takes the place of a noun. आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था. नाउ आई एम ऑल्सो रिकॉलिंग कि प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स का प्लेस ले लेते हैं. एंड अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड दैट नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन. A person, place और thing is noun. और जो इनकी जगह हम words यूज़ करते हैं वो क्या बन गए? Pronouns. वो क्या बन गए? Pronouns. So how we replace those words with the noun? Let me tell you. Mr. Mohan is a bus driver. Mr. Mohan क्या है? एक bus driver है. मिस्टर मोहन इज़ अ गुड मैन. मिस्टर मोहन क्या है? एक अच्छा आदमी है. मिस्टर मोहन ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल. मिस्टर मोहन जो है वो बस में ड्राइव करके चिल्ड्रंस को स्कूल तक लेके जाते हैं. सो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन. इट डजंट साउंड गुड. ये आपको बार बार सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा. सो हमको ग्रामर ने एक सुविधा प्रदान की, एक तरीका बताया कि आप एक चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट ना करें. इसलिए इन प्लेस ऑफ मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. Mr. Mohan replaces with the word he. Mr. Mohan को हमने किससे replace कर दिया? He से. And Mr. Mohan is noun and the replacing word he is pronoun. So आपको यहाँ समझ आया होगा कि हमने जब Mr. Mohan को he से change कर दिया तो वो क्या बन गया? Pronoun. And our sentence also changes. अब हमारा sentence क्या हो जाएगा? Mr. Mohan is a bus driver. Second, Mr. Mohan is a good man changes to he is a good man. Mr. Mohan की place पे हमने क्या लिख दिया? He. He is a good man. Mr. Mohan drives children to school. Again Mr. Mohan changes to he. Suppose the third sentence is everybody likes Mr. Mohan. Let me add one more sentence. Everybody likes Mr. मोहन. अगेन ये आपको सेंटेंस सुनने में अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा होगा. देन अगेन वी चेंज मिस्टर मोहन टू हिम. एवरीबडी लाइक्स हिम. So like this, the sentence is
which contains naming words again and again. To avoid the repetition को avoid करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? pronouns. he, she. अगर मेल है तो he आएगा, फीमेल है तो she आएगा, एंड इन द ऑब्जेक्ट प्लेस her, him. बहुत सारे लोग हैं तो they. like this we will use the pronouns. Let me show you few more examples. First of all, let's recall the basic words which we use as pronouns. I, my, me. We, are. He, she, it. His, him, her. Them, they, you, yours. These are few words which are used in place of the naming words and they are called pronouns. जो कि naming words की जगह यूज होते हैं और हम उनको क्या कहते हैं? pronouns. Now, as you know that the nouns are also singular and plural, उन्हीं की तरह आपके pronouns भी singular और plural की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं. I, he, she, it, me, him, her, it. These are few words जो कि सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं. जो किस में आते हैं? सिंगुलर की कैटेगरी में. Like Bhumi is a girl. Bhumi likes to eat chocolates. तो क्या आ जाएगा? she. Because Bhumi क्या है? एक singular person. Then for plural we use we, they, us, them. Plural के लिए हम use कर रहे हैं we, us, they and them. Like the sentence is we love our family. हम अपनी फैमिली को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं. अब आप एक सेंटेंस बोलते हैं I, my father, my mother and my sister are going to party. So this sentence doesn't sound good. We put a single word, that is we. We are going to a party. हम सीधा सा बोल देंगे we are going to party. And this is the correct sentence and sounds good also. Now, you is used for both. You जो है आप सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी. Like you are my friend. तुम मेरे दोस्त हो. You two are my parents. तुम दो मेरे पेरेंट्स हो. So we are using as singular as well as plural. See, you must play as a team. तो ये बहुत सारे टीम मेंबर्स को कहा जा रहा है कि तुम सबको एक टीम की तरह खेलना चाहिए. एंड डू यू हैव अ पेन. क्या तुम्हारे पास पेन है? ये सिंगल पर्सन से पूछा जा रहा है. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. एंड यू आर माई पेरेंट्स. तुम मेरे पेरेंट्स हो. सो पेरेंट्स आर मोर देन वन. फिर भी हम यहाँ यू यूज कर रहे हैं. और फॉर अ सिंगल फ्रेंड ऑल्सो वी आर यूजिंग यू. आई होप यू अंडरस्टैंड कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मी टेल यू इन अ रिदमेटिक वे. एक रिदम के थ्रू आपको मैं सिखाती हूँ. रिया टेक्स कप केक. रिया गेव मी वन. सो रिया इज नाउन and we replace with pronoun. The pronoun is she. So let's the sentence is
let's the sentence we speak. She gave me one. So when we repeat the name again and again, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा ये बार बार नेम सुनना. That's why हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ? सर्वनाम. आप हिंदी में जो सर्वनाम यूज करते हो, मैं, हम, तुम, वो, उसका, इसी तरह इंग्लिश में भी आपके प्रोनाउंस हैं. Ram and Shyam played games. Ram and Shyam had fun. Ram and Shyam had played games. Ram and Shyam had fun. Ram and Shyam क्या है? Nouns. और राम और श्याम को we change into pronoun. They had fun. So the noun changed to pronoun. The noun changed to pronoun. In this manner, the naming words changes to the pronoun. And you very well know that pronoun is also called replacing word of noun. Pronoun क्या कहला रहा है? Noun का replacing word. So I hope you understand how you are able to change a noun to a pronoun. Now, let me tell you that how you will change. Suppose we are talking about a boy, a man. So we use he. ही हम यूज करेंगे सब्जेक्ट की जगह. एंड वी कैन यूज हिम ऑल्सो. हम हिम भी यूज कर सकते हैं. फॉर अ गर्ल, फॉर अ वुमेन like your mother, your teacher, you will use she or her with it. For boy you can use his also. And for a thing or animals you will use it. And for plural you will use they. When you are talking about yourself, you will use I, my, me. जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो I, my, me. So these are the words which are categorized कि आपने मेल के साथ ये यूज़ करना है, फीमेल के साथ आपने ये यूज़ करना है. For the things you can use this. And for yourself जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो I, my, me. I hope you understand. When you are talking about your father, you will use he. Your mother, your father, he. Grandfather, he. Mother, she. And when you are talking about yourself, you will use I. And when you are talking about your family, you will use we. So, as I always say that good morning students. So, when you are alone, जब आप अकेले हो तो आप कहेंगे good morning. And when you are in a team तो आप किस तरीके से कहेंगे? The things changes. जो बोलने का तरीका होता है वो आपका बदल जाता है. Now after good morning, I ask how are you all?
when you are alone in the class तो आप कहेंगे I am fine, and when there are many students in the class you will say we are fine. So I think अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि how we can use singular and plural words in the form of pronoun. Now it's the time for homework. So today I will assign you the homework, and the homework is in the form of assignment. As you know that the assignment will be available on Edquark website. So you go through the Edquark website for the assignment and note it down in your notebooks and do it. After that I will provide you the solution of homework. So you have to check your homework accordingly. आपको अपना होमवर्क उसके अकॉर्डिंग चेक करना है. Then do the correction and revise your work. Revise lesson 7 and 8 for test. Your test will be on 3rd of June. So you have to get ready for the test. Now it's the time for homework solution of the previous lecture. I have given you the homework. Circle the pronouns in the given sentence. Is the first sentence, have you finished your work? Have you finished your work? So where you is pronoun and I circle it. Now second, yes madam, I have. So where I is pronoun. He is playing. He is pronoun over here. She is very good girl. So she is also pronoun over here. Suppose I ask you that replace this pronoun with noun. Are you able to replace? क्या आप replace कर सकते हैं? It's very easy. She की जगह आप किसी गर्ल का नाम लिख दीजिए, या he की जगह आप किसी गर्ल का नाम लिख लीजिए. So in this manner you can also replace a naming word to a pronoun or a pronoun to a naming word. You are a naughty boy. You is again a pronoun over here. We are happy. So again we is pronoun over here. They were sleeping. So they is also pronoun over here. And which type of pronoun we and they are? We and they are plural. They are plural क्योंकि they are reflecting many peoples. He, she, it, I. They are reflecting the single person. That's why they are singular. Now the next sentence. These are chairs. These is also a pronoun and it is also a plural factor, plural word which reflect the
many things. I hope अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. You can go through the lecture twice and you have to be prepared for the test. In the test आपको लिखना आ सकता है कि circle the pronouns, आपको आ सकता है कि rewrite the sentence and change the underlined nouns into pronouns. आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है rewrite the sentence by changing the pronouns into nouns or nouns into pronouns. So like this you have to practice so that आपको pronouns अच्छे से आ जाएं. So before ending the lecture I am again over here to tell you, मैं दोबारा से आपको बताना चाह रही हूँ, your homework as assignment that will be on EDQuack website, आपको EDQuack website पे मिल जाएगा. Solution for homework also on the EDQuack website on the next day. You have to do the correction from there only and you have to revise lesson 7 and 8 for test. That will be conducted on 3rd June and the timing I will tell you later कि what will be the timing of your test. So be prepared. Have a good day. For subscribing the channel, you can subscribe this EDQuack channel on YouTube and you can even like the videos which you see. जो आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, आप उसको लाइक भी कर सकते हैं. You can share also, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं. So have a good day. Thank you.